viewers. Hello viewers. Today I am going to tell you about a Python modules. What is a module? Consider a module to be the same as code library, a file containing a set of functions you want to include in your application. So there is a pre-made function set of functions which you can use in your application. Create a module, but you can make a user defined module. So create a module. To create a module, just save the code you want in a file with a file extension .py. As usual, the Python extension is .py, so we can save our module in the file like extension .py. Save this code in file name mymodule.py. Make a module and write the name mymodule.py. Define greeting name. Now you are defining a module, a greeting, and in which you are printing hello name. A name is a argument which you are passing in a module through function. Use a module. How to use the module? Now you have made the module. Now how to use it? Now we can use the module we just created by using import statement. As usual, we use the import statement to call any function or any module. So write import my module dot greeting Amit. When you pass the argument Amit, then it will print the Amit in a module which we have defined previously. This is the module which we have defined. Define greeting name. Amit will come in parameter name and will print the hello Amit. When using a function from a module, use the syntax module name dot function name. Now how it will work, just see in the Python in which I have written already define greeting name print hello plus name and save by the name of my module.py. Then I will print this module by using the another program in which I call the import my module and my module.greeting journal or any name which you want. Suppose I write here Amit because there I have told you about Amit. Now run it. It will print hello Amit. So this way we can call any module in any program, but before that we have to make a module in a separate file where we have module function. Now the variable of module. Variables in module. The module can contain function as already described, but also variable of all types. Array, dictionary, object. As I already teach you, class, object, dictionary, array, all these things. Save this code in the mymodule.py और उसको mymodule.py में सेव कर देंगे. Here I have written save this code in my module.py. I have made a separate module for that. Person 1 equals to name equals to Amit, age equals to 32, country equals to India. Import the module name my module and access the person 1 dictionary. Same way as we define my module.py, same way we will define the my module 1.py in which we write name Amit, age 36, country India, and then we make a separate program to call it the module. Here I import the my module, my a equals to my module dot person 1 age. Now I want to print age, so I have written here age and print a. So how it will do? Just open the my module file, close,
file, open my module 1. Here I have written the program my module 1, in which I define a person 1 equals to Amit, age equals to 36 and country equals to India. And be careful, write colon between these two. So it will define the module. Next I have to print this module. So open the print module 1. Print module 1. Here I have written several programs. You concentrate only for the my module 1 and printing A equals to my module 1 person 1 age. As I told you, I have to print the age from my module 1. What is the my module 1? My module 1 is person 1, name Amit, age 36, country India. So now print the my module 1 age. So it will print the age of the my module 1. Next is the when using a function from the module, use the syntax my module name function name. नेमिंग अ मॉड्यूल. अब मॉड्यूल का नेम करने के लिए हमने क्या किया था, मॉड्यूल को .py एक्सटेंशन से सेव करेंगे. यू कैन नेम द मॉड्यूल फाइल वॉट एवर यू लाइक, बट इट मस्ट हैव अ फाइल एक्सटेंशन. जरूरी नहीं है कि मॉड्यूल फाइल का नाम माई मॉड्यूल ही रखें, कुछ भी रख सकते हैं. और py फंक्शन उसका एक्सटेंशन रखना पड़ेगा एज यूजुअल, जैसे पाइथन का फंक्शन का फाइल का ना एक्सटेंशन होता है. देन रीनेम मॉड्यूल. अब रीनेम करने के लिए क्या करेंगे, रीनेम करने के लिए अलाइस यूज करेंगे. ठीक है, alias, you can create alias when you import a module by using the as keyword. as keyword यूज करके क्या करेंगे, हम उसको रीनेम कर लेंगे. कैसे करेंगे, create an alias for my module called mx. अब मान लो my module को हमने mx रखा. import my module as mx. so it is importing the my module mx as my module as mx. Now we print a mx dot person 1 age print a. What is the difference? There only we write a my module in place of mx. We have written the my module in place of mx. Here I write a mx person 1 age a print a. So it will print the same value as I have printed by using my module. Built-in module is import and use the platform module. अब built-in module कौन सा है, platform है. When we write x is equal to platform dot system, तो कौन सा प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं वो प्रिंट कर देगा. तो हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, हम लोग विंडो यूज कर रहे हैं. So it will print window. Then next come dir module. Then next come dir module. There is a built-in function to list all function name or variable name in module. The dir function. List all defined name belongings to the platform module. Import mod platform x is equal to dir platform print x. The dir function can be used on all module, also the ones you created yourself. So dir module हम कहीं भी यूज कर सकते हैं. It will list all the function name or variable name in the module. dir से function name और module name print हो जाएगा. अब यहाँ पे print module में हम जाते हैं, इन तीन चीजों को जो बताया अभी हमने उसको print करके देखते हैं. पहला है कि mx यूज किया alias
इन प्लेस ऑफ माई मॉड्यूल 1। दूसरा है प्लेटफॉर्म यूज़ किया, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना बता देगा। तीसरा dir यूज़ किया, जो ये बता देगा कि प्लेटफॉर्म डायरेक्टरी में क्या क्या फंक्शन और वेरिएबल यूज हुए। तो ये देखिए इतने वेरिएबल जो सिस्टम के यूज हुए वो सब दे रहा है। ठीक है, तो dir क्या देगा, सिस्टम के वेरिएबल्स का नाम विच इज वी आर यूजिंग इन आवर प्रोग्राम। So this is up to the dir. Now import from module। अब हम from यूज करके मॉड्यूल में से import करेंगे। The module name my module has a function and one dictionary। अब यहाँ पे देखो define greeting name is the function and person one equals to the dictionary for the person। तो def printing name and printing hello plus name जो हम लोग पहले ही यूज कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको यूज करके बताएंगे। import only the person one dictionary from the module। अब person one dictionary from the module किसको यूज करके, from यूज करके। from my module import person one। हम लोग पहले लिखते थे import my module, अब लिखेंगे from my module import person one, print person one age, और सीधे दे देंगे print person one age। क्या डिफरेंस है, ऊपर करते थे हम लोग import my module a equals to my module person age, तब प्रिंट करते थे। इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट person one age। अब कैसे करना है इसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोग तीसरा मॉड्यूल बना रहे हैं, उसमें ओपन करते हैं उसको और माई मॉड्यूल 2 किया। इसमें ये देखिए फंक्शन डिफाइन है एंड डिक्शनरी डिफाइन है। देयर इज अ फंक्शन एंड डिक्शनरी विच वी हैव डिफाइंड इन मॉड्यूल 2। नाउ प्रिंट दिस मॉड्यूल बाय ओपन अ प्रोग्राम print module 2। From my module 2 import person one। Now you are importing the person property from the my module 2 and you are directly printing the person one age। So it will print the person A। So run it। It will give you a 36। So two way we can import the modules, direct write import module name, or you can use a from module 2 import person one to receive the value from the module। So this is all today. Tomorrow I will take some another program। So note, when importing using a from keyword, do not use the module name when referencing to the element in the module। अब यहाँ पे मॉड्यूल नहीं लिखेंगे, सीधे प्रिंट पर्सन वन एज लिखेंगे जब हम फ्रॉम यूज करेंगे, जो हमने रन करके आपको दिखाया। दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। थैंक यू। इफ यू लाइक देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।